Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing about the second tool of recombinant DNA technology, that is the cloning vectors. तो क्योंकि पहला tool जो था that was restriction endonuclease. Now we have got the desired fragments of the DNA and the desired genes, and we have separated all these fragments by gel electrophoresis. Now we use some vectors which will carry that desired fragment or desired gene of interest. Those vectors are called cloning vectors. So what are actually these vectors? They are carriers or vehicles of desired DNA fragments which can undergo independent replication to increase copies of desired genes. तो ये क्या होते हैं? ये कैरियर्स होते हैं, ये जिनको हम व्हीकल्स बोलते हैं, जो एक्चुअली डीएनए फ्रैगमेंट्स से होते हैं, जिनको हम पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं. तो जो रेप्लिकेशन करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब दे कैन रेप्लिकेट, ये खुद ही रेप्लिकेशन करते हैं. तो जब ये रेप्लिकेशन करेंगे तो इनकी कॉपीज़ बढ़ जाएंगी, और इनमें जो हम जो डिज़ायर्ड जीन हम इनमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी भी कॉपीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी हमें ज़रूरत होती है. सो व्हाट आर क्लोनिंग? दे आर कैरियर्स और व्हीकल्स ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए. सो वी कैन राइट इट हियर. These are carriers or vehicles of desired DNA fragments, passenger DNA, which can undergo independent replication to increase the copies of desired genes. तो अब ये क्या होते हैं? तो ये एक कैरियर्स होते हैं जो कैरी करते हैं, या व्हीकल्स होते हैं, ये एक्चुअली डीएनए होते हैं, और इनमें हम एक्चुअली इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है, डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट होता है डीएनए का, इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस वेक्टर के थ्रू ही रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है. तो डेफिनेटली जब ये कॉपीज़ बनाएगा तो उस जीन की भी कॉपीज़ बन जाएंगी. तो इसमें एग्जांपल्स हैं, फॉर मुख्तलिफ़ किस्म के वेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है, हम प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो प्लाज्मिड भी हम करते हैं. वी यूज़ फेजमिड्स हम इस्तेमाल करते हैं, फेजमिड्स. प्लाज्मिड्स, फेजमिड्स, कॉस्मिड्स, या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, etc. So these are all actually vectors which are used for
cloning of the desired gene, because this is cloning procedure, and cloning means that we are generating identical copies of a particular gene. It's gene cloning here. So we have to produce um, a large number of desired gene, and for that purpose we need those vectors which are called cloning vectors. So the cloning vectors are actually DNA, and they are then used in this recombinant DNA technology to generate the copies of desired genes. We use plasmids, we use phagemids, we use bacteriophages, we use you know some artificial chromosomes. So these are actually the vectors which are being used. So what are actually the features which we use? So we will be discussing these features in the next lecture.